and welcome to the Dental Academy. I am Dr. Vaishali and today we'll be continuing the tooth development. In the last video we learned about the formation of dental lamina, and in this video we'll be covering the stages in tooth development. So there are three stages in the tooth development. The first stage is the bud stage. The second stage is the cap stage, and the third stage is the bell stage, which is further divided into early bell stage and late, or also known as advanced bell stage. These stages are named so because of the morphology of the dental lamina, which results in the name. So in the bud stage, the dental lamina looks like the bud, whereas in the cap stage it forms a cap-like shape. In bell stage it looks like a bell. So before we move further, I would like to give you a recap from the previous video, that how was dental lamina formed and what are plicots. So in the previous video we learned that the ectoderm forms the dental lamina and the vestibular lamina. The vestibular lamina further forms the vestibule of the mouth, whereas dental lamina is separated from the ectomesenchyme, that is the connective tissue surrounding the dental lamina is the ectomesenchyme, by the basement membrane, this membrane which separates the dental lamina from the ectomesenchyme. What happens is there is proliferation at certain specific points in the basement membrane. In this basement membrane there is proliferation, 10 in the upper jaw, the developing maxilla, and 10 in the lower jaw, the developing mandible. These points are known as the plicots, where the future tooth will give rise. That the dental lamina forms plicots. Giving a plicot a larger picture, we'll see the plicot then proliferates and forms a shape of a bud. So this gives rise to the bud stage in tooth development. Stage. So how is the bud stage formed? होता क्या है, जब प्लिकॉट में proliferation होती है तो प्लिकॉट एक बड की शेप में फॉर्म हो जाता है, जिस वजह से इस स्टेज का नाम बड स्टेज रखा जाता है. तो बड स्टेज में होता क्या है, द डेंटल लमाइना विच फर्दर फॉर्म्स द बड, इस पोर्शन को हम बोलते हैं इनेमल ऑर्गन, बिकॉज ये फर्दर फ्यूचर में हमारा इनेमल फॉर्म करता है. ओके, because eventually it will give rise to enamel, and the surrounding is the dense condensation of the ectomesenchyme, which is primarily derived from the neural crest. Okay, neural crest cells. ठीक है, तो ectomesenchyme is separated from the enamel organ by this layer, which is the basement membrane. So now we'll be learning कि what is the histology of the bud stage. bud stage की histology क्या है, bud stage में कौन से तरह के सेल पाए जाते हैं. So the outer layer is the low columnar cell which surrounds the enamel organ, जो periphery में present होते हैं. These are the low ये हमारे इनेमल ऑर्गन की पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड सेंटर में होते हैं पॉलीगोनल सेल्स. ओके, these are located centrally within the enamel organ. Okay, then what surrounds the enamel organ? Surrounding the enamel organ is
the dense layer of the ectomesenchyme cell. These are the connective tissue which is present around the bud stage. So now what happens, because all the cells do not differentiate evenly, unequal proliferation की वजह से जो bud stage है that converts into the cap stage of tooth development. Uneven cell proliferation की वजह से bud shape जो stage है that converts to a cap stage. होता क्या है कि कुछ पोर्शन में सेल डिवाइड होते हैं एंड कुछ पोर्शन में सेल डिवीजन रुक जाता है. सेल इस पोर्शन में डिवाइड करते हैं, इसकी वजह से एक कनकेविटी बन जाती है. कनकेविटी की वजह से जो शेप बनती है दैट लुक्स लाइक अ कैप, दैट रिजेंबल्स अ कैप विच गिव राइज टू द कैप स्टेज इन द टूथ डेवलपमेंट. So the cap stage is formed. Once the cap stage is formed, there are three types of cells which are present in the cap stage. The first one are the outer cuboidal cells which are present on the outer surface of the enamel organ. This was our enamel organ, and these are the cuboidal cells, and it forms the outer enamel epithelium. Okay, these cells are present on the outer side, and these are the low cuboidal cell which forms the outer enamel epithelium, whereas the lower side of the enamel organ is the inner enamel epithelium, which are the low columnar cells. Okay, these are the cuboidal cells and these are the low columnar cells. The third type of cells which are present are the stellate reticulum. Okay, जो कि पॉलीगोनल सेल्स ही कन्वर्ट हो जाते हैं स्टिलेट रेटिकुलर सेल्स में. अब ये थर्ड टाइप इज द स्टिलेट रेटिकुलम सेल्स. अब हाउ आर दीज स्टिलेट रेटिकुलम सेल्स? आर स्टार शेप सेल्स होते हैं, ये स्टार शेप सेल्स होते हैं ये. ओके, लेट्स गो फॉर द. सो जो बड स्टेज में हमारे पास पॉलीगोनल सेल्स प्रेजेंट थे, वो सेल सिक्रीट करते हैं ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस. दीज ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस आर सिक्रीटेड एक्स्ट्रा सेलुलरली, मतलब ये यहाँ पर सेल के बाहर रिलीज करते हैं. So this glycosaminoglycans are hydrophilic in nature. Hydrophilic means that they love water. They are attracted to fluids. So because of their hydrophilic nature, जो हमारे पॉलीगोनल सेल है वो हमारे एक्टोमेसेनकाइम, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है साइड में, उससे सारा फ्लूइड सेल के अंदर अट्रैक्ट करते हैं. एंड हेयर बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस द फ्लूइड गोज विद इन द पॉलीगोनल सेल्स, रिजल्टिंग इन द पुशिंग ऑफ द सेल. जो सेल्स है उनके सराउंडिंग में इतना फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है दैट दे टर्न इनटू द शेप एज मेंशन्ड. व्हेन द फ्लूइड स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट इन द एनामल ऑर्गन, मतलब जब यहाँ से फ्लूइड अंदर की तरफ जाता है तो पॉलीगोनल सेल्स आर पुश्ड अपार्ट, दे स्टार्ट्स टू सेपरेट, बट दे डोंट लूज देयर कॉन्टैक्ट. दे फॉर्म star shapes and they stay connected with or each other, forming the
stellate reticulum cells. Okay, these cells are connected, जो सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं at the desmosomal junction. Hence this connection results in the star shape of the polygonal cell, resulting in formation of stellate reticulum. Because these cells are connected, this gives a cushion-like consistency. Basically, it works as a shock absorbers. That the bud stage is converted to the cap stage because of uneven proliferation, and in cap stage there are three types of cells: outer enamel epithelial, which are the cuboidal cells; inner enamel epithelial, which are the columinous cell, and in the center is the stellate reticulum cell, and surrounded by the layer of ectomesenchyme. Okay, so this is the outer enamel epithelium, this is the inner enamel epithelium, और जो हमारे inner enamel epithelium के पास ectomesenchyme की एक dense layer present होती है, this layer इस point पर जो हमारा ectomesenchyme present है, it forms the dental papilla. The surrounding which is present, it forms the dental sac, या फिर हम इसे डेंटल फॉलिकल के नाम से भी जानते हैं. ये फ्यूचर में हमारा सीमेंटम, पेरियोडोंटल लिगामेंट और बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है. एंड दिस इज द इनेमल ऑर्गन विच फर्दर इन फ्यूचर फॉर्म्स द इनेमल. सो एंड दिस एंटायर थिंग इज नोन एज अ tooth germ. So dental sac. What is dental sac? Dental sac हमने अभी पढ़ा कि dental sac में हमारे पास तीन पार्ट है. First is the enamel organ. This is the enamel organ we have. जो कनकेविटी में हमारे पास ectomesenchyme है is the dental papilla, और जो रेस्ट हमारा dental ectomesenchyme present है is हमारा dental follicle. इनेमल ऑर्गन फ्यूचर में क्या बनाता है, नाम से सजेस्ट करता है. इनेमल डेंटल पेपिला बनाता है, डेंटीन एंड पल्प. D for dentine and P for pulp. As a mnemonics, you can remember this. And the third is the dental follicle, which forms the cementum, periodontal ligament fibers, and the bone. Okay. Before we go to the next stage, that's the bell stage, there are few important terms that you should know. The first one is the enamel knot, enamel cord, enamel septum, and enamel navel. Okay, so I'll tell you about all these terms. हमारे पास हमारा enamel organ था cap stage में. Okay, so I'll just start with enamel knot. जो हमारे enamel के सेंटर में सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो इकट्ठे होकर एक नॉट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम enamel knot बोलते हैं. जब ये नॉट एक्सटेंड होती है towards the outer enamel epithelium, it forms a cord. And when this cord is long enough कि ये outer enamel epithelium को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो it forms a septum, and जिस पॉइंट पर ये outer enamel epithelium को टच करती है, it is the navel. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to the channel. We'll be continuing with the early bell stage and bell stage in the coming videos. Thank you.